Good morning, dear students. Myself is Deepti from Dip Scroll Bag, and in today's lecture, we are going to continue the reading of Geography chapter, History chapter 14. History chapter 14, and today is the conclusion video of this chapter. And in this chapter, we are going to read about the cabinet mission. Till now, we have read about that in first was during the Second World War. Uh, British government want that we should participate in from British side, but our Indian politicians were against it, and they have. So after what happened after the World War II, there was a change in government, political change in the government, that Liberal Party come into the power, and uh, after the Second World War. When the power, the and this government was in the favor of the request of Indians. They want that Indians should be get free for now, for from British rule. So it announced the independence of the Indians as desired by leaders. Uh, cabinet mission consisting of Patrick Lawrence, Sir Stafford Crisp, and A.V. Alexander was sent to India in March 1946 in order to discuss the transfer of power with the Indian leaders. It discussed that India will be a federation consisting of provinces of British India and princely state, and the federal central will have control over finance, foreign affairs, and communication. Both the Congress and Muslim League accept the offer. It also suggests an interim government in all parties to be set up, and also constituent assembly to be found, which could formulate a constitution for free India. जी, तो हमको आज़ादी का जो हम सपना देख रहे थे, वो अब हमको साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिस मिशन यहाँ पे भेजा गया, जिसके 3 मेंबर्स थे। इन्होंने इनको यहाँ भेजा गया था कि भी देखा जाए कि भी जो पावर की ट्रांसफ़र है वो इंडियन पॉलिटिशियन या इंडियन लीडर्स को कैसे वो ट्रांसफ़र किया जाए, एक नंबर 2 पे उन्होंने ये भी देखा कि भी ऐसा करते हैं कि इनको धीरे धीरे एकदम पावर नहीं देंगे, धीरे धीरे उन्होंने पावर देने का किया, जिसमें सर इनिशियली उन्होंने पहले फाइनेंस दिया, धीरे धीरे करके और भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स थे, या इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थे, या इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री वगैरह थी, वो जो है वो धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिशियंस को देने शुरू कर दिए, ताकि वो गवर्नमेंट को सही ढंग से रन कर सकें। और उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है होगी यहाँ पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी जो भी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं उनको मिलाकर एंड प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन करके बनेगा ये। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही इस बात से बहुत खुश थे कि चलो हमें अपनी आज़ादी तो मिल रही है, बट मीनवाइल एक और चीज़ भी हुई। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का भी किया कि भी जो हमारे ये जो इंडिया है फ्री कंट्री बनेगा, इसकी कोई तो कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा तैयार करने के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट करने का काम भी किया। In July 1946 elections, the Congress won the majority of the seats. Shocked by this, the Muslim League boycotted and observed the day 16 August 1946 as a direct election day. The Muslim League condemned and the Congress and British government, and decided to restore to the direct election to achieve its demand. हार रही थी मुस्लिम लीग, वो समझ नहीं पा रहे थे, स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना, वो ये चीज़ को पचा नहीं पा रहे थे कि भी वो कांग्रेस से कैसे हार गए। वो हर किसी चीज़ को लिए हुए कांग्रेस को ही जिम्मेवार दिलाने लग पे। उन्होंने कहा कि भी जो जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए ये फ्री फेयर नहीं हुआ पड़े, इसमें कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है। तो उन्होंने 16 अगस्त को उन्होंने कहा कि भी हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन डे करेंगे, जहाँ पे मुस्लिम लोग सामने आकर खुद ही वोट डालेंगे एंड इलेक्शंस करेंगे।
Riots and reactions. Riots broke out in Calcutta, Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, and Bombay. In these riots, many Hindus, Muslims were killed. Gandhiji was upset. He went around to riot affected areas and tried to bring peace. In 1946 September, an interim government was formed with Jawaharlal Nehru as the head of the government. The Muslim League joined the Congress, and for a later replacements, the Constitution Assembly started its work for drafting Constitution of India in December 1946 December. Dr. Rajendra Prasad was the president of Constitution Assembly and Dr. Bhimram Ambedkar was the chairman of the drafting committee. ओके दो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, रूप उसकी रूपरेखा देखना, उसकी एक असेंबली बनाई गई थी। उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, इसमें क्या नहीं, क्या डाला जाएगा, कैसा होगा, इस वो सारा का एक ड्राफ्ट करना, ड्राफ्ट यानी कि कच्चा मसौदा तैयार करना, उसको में लिखना क्या है, या इंडेक्स वगैरह या जो भी चीज़ें लिखनी है, उसकी कमेटी जो थी उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वेयर एज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द president of Constitution Assembly. This is very important, and we should aware of this difference. The first step for the independence, the Muslim League boycotted the Constituent Assembly and did not permit the interim government to function well, which disturbed the peace of the country. And on 20th February 1947, Clement Attlee made the final announcement that British would transfer the power to Indians. By June 1948, on hearing this, the Muslim League started agitation for the partition of the country. As a result, on 23rd March 1947, the League observed Pakistan Day. तो ये सब कुछ जो पार्टीशन ऑफ हम लोग बात करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की पार्टीशन की बात है, तो उसमें मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा हाथ है। तो मुस्लिम लीग ने ये क्यों किया कि भी उस मेन एम था कि मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग का पूरा का नहीं आता इसमें, सिर्फ एक बंदा जिसका नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारा उसका करा धरा था, उसने ही, उसके कहने पे ही लोगों ने किया था। तो ये मुस्लिम लीग जो भी है, मुस्लिम लीग ने ही पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात की थी। उन्होंने कहा था कि दो नेशन किया जाए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। The partition of India. The Lord Mountbatten came to India in 1947 as the last viceroy. In June, he presented a plan for partition of India into two states as India and Pakistan. This was accepted by Congress in order to avoid further riots and revolts. Gandhiji tried to unite Hindus and Muslims, but in vain. He finally accepted the partition of India. There was riot which was severe. Lakhs of people killed, houses were destroyed. It happened that even after so many years of disunity between the two nations. Riots यानी कि दंगा, एज वी नो, हम लोगों ने सुना भी है, हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना भी है कि भी 1947 के जो दंगे हुए थे उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, जो भी थे, दोनों तरफ के लोगों को मारा गया था। घर उजड़ गए थे, लोगों अपने घर छोड़कर कहीं बाहर आना, मतलब कि अपने घर बसा बसाया घर छोड़ के निकले थे लोग, ये सब कुछ उनको देखना पड़ा था। तो महात्मा गांधी ने शुरुआत में बहुत कोशिश की थी कि हिंदू मुसलमान कम इकट्ठे हो जाएं, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली महात्मा गांधी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम के दो देशों की जो थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, ताकि दोबारा कोई ऐसे रियॉट ना हो सके और रिबिलियन ना हो सके, जिसके कारण देश को फिर से खतरा हो सके, देश की शांति को खतरा आ सके। Next is the Free India. In June 1947, the transfer of power was announced.
According to the Mountbatten, the two nations known as India and Pakistan were to be set up, and each would draw up its own constitution. Punjab and Bengal were to be divided on the base of Muslim and non-Muslim areas. A boundary division was made by the Boundary Commission. The princely states were given the freedom to join either India or Pakistan or remain to free and independent. About India, both India and Pakistan were given freedom or to leave or remain in British Commonwealth. On 15th June 1947, Congress accepted the plan. British passed the Indian Independence Act in July 1947, which signaled the end of British rule in India. Power were transferred to the new domains, India and Pakistan. Pakistan became independent on the midnight of August 14 and on 15 August 1947. The national flag of independent India was hosted at the Red Fort, Delhi. Jawaharlal Nehru took over the first prime minister as the first Prime Minister of India, and Lord Mountbatten became the first Governor General of India. The Constitution of India. जी, आज़ादी मिली हमें, दो देशों के रूप में हमको आज़ादी मिली, जिसमें एक पाकिस्तान था, हिंदुस्तान था। पाकिस्तान हम जो आज़ाद हुए तो 15 और 14 अगस्त की रात को ही हुआ। रात के 12 बजे हमें इंडिपेंडेंस मिली है, जो हम मानते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of our country, and the first governor general of independent India was Lord Mountbatten was there. Next is the Constitution of India. Constitution Assembly was formed as per the provision of the Cabinet Mission planned. It has framed the Constitution for India, which had a diverse culture, religion, tradition. It was tasked to frame constitution keeping in mind the following. Number one, India is a multi-legal, cultural and religious nation. All religions and the languages must be treated with respect to ensure that economic unity is established. So on 9th August 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the chairman of the assembly, and Dr. Ambedkar was appointed the chairman of the drafting committee. It took nearly 3 years to bring out the final draft of the constitution, which was passed on 26 January 1950. The 26 Jan is celebrated as the Republic Day, as India became a republic and constitution framed by us come into force. So constitution बनाया गया, और as we have discussed previously, Dr. Rajendra Prasad was the head of the president of the Constitutional Assembly, whereas the Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairperson of he was appointed as the chairperson of drafting committee. So it took approximately 3 years. The correct timing is 2 years, 2 years, 11 months and 20 days, and might be 20 days is there. So approximately 3 years it took, and on 26 January 1950 it was come to into force of into the Indians. This was the story of independence, of how we get the independence from British rule. Thank you very much. Have a nice day.